Hello friends, my name is Prabhat Kumar Pandey and I'm a student of MCOM Applied Economics second semester, and today I am here with my friends to discuss about public distribution system in India. So firstly, it's important for us to understand what is PDS. So it is mainly a system in which government provides foods and non-food items to the poorer section of society at a subsidized rate, at a fair rate. In this, food and non-food items are provided at subsidized rate through a chain of fair price shops or ration shops. The origin of PDS go back to the system of food rationing introduced by British during the Second World War. In food rationing, the scarce resources that were food items were provided to the poor people of the society at a subsidized rate or a fair rate. It was subsequently dismantled and had been reintroduced at the time of independence. At the time of independence, when Britishers left the country, people below poverty line in the country were 80% of the total population. So it was very much needed a system through which poor people of the country can get a food item at a fair price. The national food grain production dropped from 89 million tons to 72 million tons from 1964 to 1966. The reason for this was severe drought in Bihar, in Rajasthan, and several other regions of the country. The rise of price of food grains caused migration and starvation within the country. And here came in the picture PDS system. The government set up more than 20,000 fair price stores to provide food at regulated price for the poor or those are with limited resources. Subsequently, the government set up the Agriculture Price Commission and FCI to improve the domestic procurement and storage of food grains for PDS. Further, many more steps were taken by the government to improve this system in the country. Presently, the PDS is operated jointly under central government and state government of the country. Central government, through Food Corporation of India, has assumed the responsibility for procurement, storage, and transportation of the food grains in the country. Under PDS, presently the commodities are namely wheat, rice, sugar, and kerosene, which are allocated to states and union territories for distribution. Thank you. And now I will ask Jyoti, my friend, to further tell us about evolution of PDS and revamp PDS in India. As Prabhat given you introduction about PDS system, now I'm going to tell you about revamped PDS system, which was launched in June 1992 to reinforce and promote the public distribution system in far-flung, remote and hilly areas. We can say in inaccessible area where a large section of poor society lives. For them, there are different kind of programs are also made, but it's covering 1,775 blocks. The program which it's covering is one of them is drought prone area program, which was launched by central government in 1973 to tackle the special problem faced by fragile area which are consistently affected by severe drought condition. Another project was Integrated Tribal Development Project, introduced in 1974 under 5th five-year program with the aim to promote education opportunity among tribal community regarding distribution system so that they can come under the mainstream of the society. Desert Development Program launched in 1977 to minimize the adverse effect through controlled diversification through revival of its natural resource based on the identified desert area. Hill Area Development Scheme initiated during 5th five-year program. The main feature of this is covering 15 districts, which one of them Uttarakhand, Assam, Darjeeling district of West Bengal and Nilgiri of Tamil Nadu, which were identified in consultation with the state government for special focus. Food distribution in RPDS area were issued by the state government at 50 paisa below the central issue price. The scale of issue was up to 20 kg per card. The RPDS include area approach for ensuring effective reach of the PDS commodities. Their delivery by state government at the doorstep of fair price shop in the identified area, additional ration card to the left out families, infrastructure requirement like additional fair price shop, storage capacity, etc. Commodities such as tea, salt, pulses, soap for distribution PTS outlet.
Now Prabhat will tell you about TPDS system. Thank you, Jyoti, for introducing me. So, friends, now I will further explain TDS in India. TDS means Target Public Distribution System. Its system was launched by the Government of India June 1997 with a focus on poor under the public distribution system. The public distribution system is an important policy instrument aimed at reducing poverty by delivering minimum aimed requirement of food grain at heavily subsidized price to the population living below the poverty line. The main motive of TPDS was to differentiate between APL and BPL categories. Earlier, these both categories people were getting cards from issue by the government by categorize the benefit provided by the government. The scheme was intended to benefit approximately 6 crore poor families, which are yearly allocation of approximately 72 lakhs ration cards. The scheme was identified of poor under the scheme done by the state based on planning commission in 1993 to 1994, which were based on the methodology of expert group of estimation and planning commission. Objective of target public distribution: it aimed to provide food security to poor and vulnerable people. It is also provide subsidies fuel of household to lighting and cooking. It is the largest food distribution in the world, accounting of 34% of cardholders in our sample. Then the implementation of public distribution system. The government of India increased allocation of BPL families from 10 kg to 20 kg of food grains per family per month at 50% of economy cost effective at 1.4.20% rate. Beneficiary are identified the state by on planning commission. Then conclusion of TDPS was it is an important component of poverty reduction strategy. It remains a key instrument of government economy policy for ensuring food security for the poor. It is ironic that country like India has more than enough require buffer stock. The performance of TPDS can be significantly improved by the survey and make the delivery system more effective, efficient, and transparent. With this, now I would like to invite my friend Ashutosh to tell his topic National Food Security. Thank you, Kumar. My topic is National Food Security Act 2013. NFSA enacted September 2013. As a human being, food is necessary for living. एनएफएसए का ये मानना था कि जो फूड है एक पब्लिक के लिए कॉमन पब्लिक के लिए एक नेसेसरी थिंग है। इसका जो एनएफएसए ने जो क्लियर ऑब्जेक्टिव कर दिया था फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच, इसमें इन्होंने क्या किया था, इंश्योरिंग किया था एक एडुकेट क्वांटिटी फूड क्वालिटी एक अफोर्डेबल प्राइस पे पब्लिक को दिया जाए ताकि वो एक डिग्निटी डिग्निटी के साथ वो जी सके और उनमें इनइक्वालिटी ख़त्म हो सके। फिर इसी के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया। उन्होंने कवरेज किया 75% रूरल पॉपुलेशन को और मोर देन 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ओवरऑल इंडिया के इन्होंने 67% पॉपुलेशन को इन्होंने अपने अंतर्गत लिया। उसमें उन्होंने क्या किया, लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराया सब्सिडीज़ रेट पे। उन्होंने सब्सिडीज़ रेट पे एक और चीज़ लाई, पर पर्सन को 5 किलोग्राम इनको देना ही देना है। उसके लिए इन्होंने रेट भी डिसाइड किया, 3 रुपये किलो राइस किया, 2 रुपये किलो वीट किया, 1 रुपये किलो मोटे अनाज किए। फिर इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ लाई, मिड डे मील। ये 2003 में स्टार्ट किया गया था। पहला जो स्टेट है तमिलनाडु था। इसके इसके अंतर्गत ये था कि एनएफएसए का जो मेन मोटिव था ताकि जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के साथ भोजन भी प्रोवाइड कराया जा सके एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ। फिर इन्होंने क्या किया साथ साथ भोजन दिया ही दिया, प्लस उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक्स भी प्रोवाइड कराई, एक स्कूल बैग भी प्रोवाइड कराया, ड्रेस भी प्रोवाइड कराए ताकि बच्चे आ भी सके और भोजन भी खा सकें। फिर उन्होंने एक स्कीम लाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अंतर्गत क्या था, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी जो गांव में जहाँ पे हमें हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड हो सकते थे, उन्होंने क्या किया, एक आंगनवाड़ी जो सेंटर्स थे उन्होंने एक हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करा रखा ताकि वो 150 दिन पहले जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं
उसके बाद उनकी जो भी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो सके। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने एक और वादा किया, उन्होंने 6,000 रुपये उनको देने ही देने थे। उन्होंने 6,000 रुपये देने का भी तरीका निकाला एक, उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में किए, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट वो दे सकते थे बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जी। फिर उन्होंने जो फिर उन्होंने एक चीज़ और टारगेट की, 6 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फूड प्रोवाइड करानी है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, फिर इन्होंने एक और सिस्टम लागू किया, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज दोनों ने साथ में मिलकर इसको काम किया। फिर इन्होंने काम किया टू फूड फॉर सिक्योरिटीज़ लाया, ठीक है। इट इज़ वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इन्होंने ह्यूमन राइट्स को भी अपने अपने साथ काम पे लगाया, ताकि लोगों को सही जानकारी, सही चीज़ें प्रोवाइड करा सके, ताकि ब्लैक मार्केटिंग भी खत्म हो सके। जो हमारे जो बीच में मीडिएटर्स जो भी थे, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, जो बीच को एक फ्लो को उन्होंने जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको बांध सके अपने अंडर में, ताकि ब्लैक मार्केटिंग और जो भी बीच में जो भी अपना कट जो ये लोग लेते थे वो सब खत्म करने के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी फूड लॉ। नाउ मिस्टर रजनीश, ओवर टू यू। I want to extend my sincere thanks for Ashutosh for introducing me. Now, I would brief you all about what One Nation, One Ration Card is. The One Nation, One Ration Card program is introduced by the Government of India to ensure the food security for all its citizens. The One Nation, One Ration Card scheme works by connecting the ration card databases to the Aadhaar and even to the biometric sync via which one can avail its benefit. It allows individuals to use their ration card to access food grains and other basic amenities in fair price shop across the country regardless the location. This scheme aims to simplify the process of obtaining food grains from the fair price shop even if they move from one place to another, that is, neglecting the geographical boundaries of their respected areas. Even if the migrants move from one state to other, this ration card or via the introduction of One Nation, One Ration Card, they can avail the benefit of this even moving from their home state to any other state, via which this the social boundaries that were present earlier now have reduced. Coming to the objective of what this scheme actually brings to the table can be listed down as One Nation, One Ration Card is an interstate ration card program which was firstly introduced in four states, and those were Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, and Madhya Pradesh. This schemes enables targeting beneficiaries under interstate ration card possibility system by removing the geographical boundaries. The One Nation, One Ration Card is to empower all the card holders to become Atmanirbhar in the respective of food storage or the occupiers of food via the government. Beneficiaries can claim a full or partial share of their food grains, and even their family members can gain the same if they have Aadhaar linked to the service. Card holders now have the option to access the targeted public distribution system and their entitled food grains from any nearby fair price shop. Before the implementation of this system, the beneficiaries could only avail this feature via the shop that was present or the shop which was located to them in their area. But after the introduction of this scheme, they can avail this benefit anywhere in India. Now, one question must be pinching you all by now is there any actual significance to this scheme, or it is just like any other scheme that is just presented on the paper like the rest of it in our country? This question would be answered by the actual factual figures that was submitted by the authorities in 22 report. It enables the right to food of beneficiaries or ration card holders that okay, they can avail the food grains under the National Food Security Act 2013. However, if a beneficiary relocates to another state, they do not need to apply for a new ration card. They can still get what they were availing in their previous state in the new state. The One Nation, One Ration Card claims that it will achieve the goal of eradicating hunger by 2030. Though India was standing in a position of 107 out of 121 in the global index. The One Nation, One Ration Card aims to eliminate the geographical boundaries and barriers and thus implementing the right to food to all. Around 37% of the population comprises of migrant laborers, via which
Because of this scheme, the pattern of the movement of migrants laborers can also be identified, and this is also very crucial for making the next necessary steps that the government can make in their benefit. The scheme is linked with Aadhaar card and biometrics, significantly reduces the chances of corruption. Just because of biometrics, the safety procedure, or one can see the allocation of their desired products or the food grains, is now more settled than the process that was followed before. With all this under one roof, the implementation of this scheme was not a cup of tea. The plan enables food grains to be distributed nationwide via the ration card. This is made possible by implementing the IT driven system that concludes installing EPOS devices in the fair price shop, and this is mandatory. Linking Aadhaar card number with ration cards and conducting the biometric authenticated services. Now, currently, 5 kilograms of food is provided across 80 crore eligible beneficiaries every month through this scheme at a minimal rate of rupees 2 or rupees 3 per kilo, just like Ashutosh said. The center also provides an additional of 5 kilogram food grains per person through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme. With all said now I would like to invite Sonali to express her views and bring a fresh perspective to our discussion. Over to you, Sonali. Thank you so much, Rajneesh, for introducing me. Now I am going to tell you about the current scenario about public distribution system, like its shortcomings and how we can overcome from this. So my first point is that जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल्स हैं, उन्हें एक सही मात्रा में खान पान प्रदान किया जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो ये सिस्टम है, क्या उसमें सच में जितने लोग एलिजिबल है उतने लोग को मिल रहा है या नहीं? तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जिन एलिजिबल पर्सनस को मिलना चाहिए उन्हें एक हद तक नहीं भी मिल पा रहा है। तो यहाँ मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि वो एक जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी दिसंबर 2023 में ई-पॉस सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसकी वजह से आप यूँ फिंगरप्रिंट से आधार लिंक करके आप उन्हें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी फूड ग्रेन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी है, जितना हमें गवर्नमेंट भेजती है, कहीं ना कहीं वो आते आते कम पड़ जाता है, और इसके बहुत सारे कॉजेज़ भी हैं। एंड सो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि अभी फ़िलहाल में ही छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट्स को लोकेट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहेगी और लोगों तक सही तरीके से पहुंच सकती है। एंड द थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन इज ओवर डिपेंडेंस ऑन फ्रीबीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग है, जिसकी वजह से एज ह्यूमन टेंडेंसी हमारे अंदर ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिलने लगती है तो हम उससे यूज टू हो जाते हैं। एंड तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए कि वो एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सके, अगर वो एक इनफ इनकम अर्न करने में एलिजिबल है तो उसे गवर्नमेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि वो और अपने इनकम पे ध्यान दे और अर्न करने की कोशिश करे, और जो सच में जिन्हें मिलना चाहिए, जो कि एलिजिबल नहीं है, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अब वर्क कर सके, उन्हें ही ये जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन इज करंट में हम सभी लोग जान रहे हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत ही करंट न्यूज़ है। इसकी वजह से पीडीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो है कि अंडर प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। और फिलहाल ही न्यूज़ में निकली थी कि 20% इन छत्तीसगढ़ इट वुड बी रिड्यूस just because of this, and mainly this farmer protest is going on western उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ जो एक मेजर एग्रीकल्चरल एरिया है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस फार्मर प्रोटेस्ट पे एक वर्क करे, ताकि ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिजॉल्व हो सके। जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को वर्क कर रही है, बट कुछ एरियाज़ अभी भी यहाँ पे हैं इंडिया में जहाँ पे उन्हें पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया गया है। जैसे कि राइसबरी, जो कि त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे एटलीस्ट 3000 कंज्यूमर्स ऐसे ढलाई डिस्ट्रिक्ट में जिन्हें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है। तो जहाँ गवर्नमेंट ये सब कर रही है, जो ये सिस्टम अवेलेबल करवा रही है, दैट्स वेरी गुड, बट उन एरियाज़ को भी ना नेगलेक्ट करें, बिकॉज दोज आर ऑल्सो पीपल्स एंड दे ऑल्सो वांट टू अचीव दिस।
एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू से इज़, मैंने अभी कहा कि जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, इकोसिस्टम को लॉन्च करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमारा जो विलेज एरियाज़ पीपल है, इवन अर्बन एरियाज़ पीपल ऑल्सो, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है जो मैं कह सकती हूँ कि वो गवर्नमेंट अपने कैंपेन्स चलाए वहाँ पे, ताकि लोगों को वो समझ में आए कि कैसे क्या वर्क हो रहा है और उन्हें सही तरीके से चीज़ें मिल सके। सिर्फ पीडीएस की ही बात नहीं है, आज हमारा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न एरा में वर्क कर रहा है। तो लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करना बिल्कुल आना चाहिए। सो आई होप यू ऑल guys will understood, and I hope my shortcomings are reliable and government will work upon it. Now I would like to request my friend Prabhat to give a thank on behalf of our teams. In closing, we want to thank you, the faculty, for letting us to share our thoughts. Your support help us talk openly and learn together. We are grateful for faculty help and excited for more discussions ahead. Thank you for making our learning environment awesome. Thank you. Thank you.